So we are starting examination of chronic abdominal conditions. Chronic abdominal conditions में पहला टॉपिक आता है हिस्ट्री. डायग्नोसिस ऑफ chronic abdominal lesions. केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिकल साइंस इंपॉर्टेंट नहीं है. एज एंड सेक्स. पेप्टिक अल्सर 15 साल से कम में बहुत कम होता है, 35 साल के बाद ज़्यादा होता है. उसमें भी गैस्ट्रिक अल्सर मोर फ्रिक्वेंटली आफ्टर 35 ईयर्स, और 35 ईयर्स से कम में डुओडेनल अल्सर. ठीक है. इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में रेशियो डुओडेनम टू गैस्ट्रिक का है 4:1 35 से कम में, जबकि इंडिया में ये रेशियो 30:1 है. इंडिया में गैस्ट्रिक अल्सर होता ही नहीं है. इंडिया में ज़्यादातर डुओडेनल अल्सर होता है. ठीक है. इंडिया दिस रेशियो इज़ 30:1 डुओडेनल टू गैस्ट्रिक अल्सर. कार्सिनोमा ऑफ स्टमक इज़ द डिजीज़ ऑफ ओल्ड एज. कार्सिनोमा स्टमक और ओल्ड एज में होता है. 35 के बाद यूजुअली डुओडेनल ज़्यादा होता है गैस्ट्रिक से. ऐसे इन जनरल भी पेप्टिक अल्सर 15 साल से कम होता है, होता ही नहीं है. ठीक है. फिर होता है हाइएटस हर्निया. हाइएटस हर्निया इन्फेंट्स में हो सकता है व्हेन द डायग्नोसिस बिकम्स डिफिकल्ट. ठीक है. और कार्सिनोमा स्टमक इज द डिजीज ऑफ ओल्ड एज. मेजॉरिटी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइएटस हर्निया इज ओवर 40 years of age. Hiatus hernia may occur in infants when the diagnosis becomes difficult. Disease of gallbladder mainly affect women of 4th or 5th decade, fat fertile 40. Congenital pyloric stenosis is obviously congenital pyloric stenosis CPS. Congenital pyloric stenosis is obviously a disease of newborn babies who start their symptoms from second month of their life. Chronic pancreatitis mainly affects individuals in their 40s, 50s and 60s. Peptic ulcer is a disease of male. Carcinoma stomach is also commoner among males, but gallbladder disease and visceroptosis are met with females with more frequently than males. कार्सिनोमा स्टमक भी कॉमन है मेल में, बट गॉल ब्लैडर डिजीज एंड विसरोटोसिस फीमेल में ज़्यादा होता है. कार्सिनोमा स्टमक मेल बट गॉल ब्लैडर फीमेल. Chronic appendicitis is more commonly seen amongst young girls. Chronic pancreatitis has no predilection towards sex. Congenital pyloric may affect first-born male babies. 2 महीने पे फिर वो स्टार्ट करता है सिम्टम दिखाना. Women fat fertile 40 chronic cholecystitis are clearly more affected than men by hiatus hernia. Congenital pyloric stenosis mainly affects first-born male babies. Women are clearly more affected than men by hiatus hernia. Cholecystitis. Occupation. Few patients have incriminated peptic ulcer, yet substantially are lacking. Professionals are bus conductor, clerk, civil servant, business executive, etc., who are habituated in drinking teas and coffees in odd times and indulging in excessive smoking. This, of course, the statistics of India may not tally with Western countries' residents. Gallbladder is common in eastern region of India, whereas peptic ulcer is more common in northern and southern parts of India due to habit of taking excessive spicy food. Gallbladder disease, eastern India, whereas peptic